So now we will discuss that how can we use the transfer function to determine certain properties of an LTI system. हम लोगों ने अभी तक we've seen several ways that how can we determine whether a function possesses certain properties such as causality, stability, invertibility, etc. In chapter 1, we saw that when we have the expression y of t given in form of x of t, we could determine whether the system was causal, stable, invertible, time invariant or linear. चैप्टर 2 में आपने देखा था कि आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी h of t given था, and based on the impulse response, how did you decide whether the system possessed causality, stability and invertibility. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि given the transfer function h of s, how can we determine whether our system is causal, stable or invertible. तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की हम h of s की रिस्पेक्ट से देखेंगे. So for a causal system, we knew that a system is causal when it comes to h of t or impulse response, when h of t is 0 for n is less than 0. यानी Laplace transform के केस में आपका फंक्शन एक राइट साइडेड सिग्नल है. Now we know that for a right sided signal, your ROC is greater than the pole. So इसका मतलब ये है कि अगर आपने देखना है कि आपका सिस्टम एक causal signal system है, तो उसका जो ROC है that should be greater than the pole और should be the right half plane. आपके पोल से एक लेफ्ट वाला प्लेन है और एक राइट पे प्लेन है, तो उसके पोल का राइट वाला प्लेन है, ग्रेटर देन द पोल होना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कॉजल सिस्टम है तो उसका ROC इज ग्रेटर देन द पोल. बट इज द रिवर्स ऑल्सो ट्रू कि अगर आपके पास किसी सिस्टम का ROC ग्रेटर देन द पोल है तो वो एक स्टेबल सिस्टम कॉजल सिस्टम है? सो नो, इट माइट नॉट बी ट्रू. दी रिवर्स माइट नॉट बी ट्रू. इसीलिए इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया जाता है. हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक LTI सिस्टम है जिसका रैशनल ट्रांसफर फंक्शन है जो कि ns/ts की रेशियो में एक्सप्रेस किया जा रहा है, सो द सिस्टम इज कॉजल इफ एंड ओनली इफ द ROC इज राइट sided half plane to the right of the rightmost or outermost pole, and the order of the numerator is no greater than the order of the denominator. यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिमिलर ऑर्डर है. तो सिर्फ उस सूरत में और आपका ROC is greater than the outermost pole for the h of s, only then you can say that your system is causal. So let's see an example where we are given that h of s is equal to es by s plus 1 and real of s is greater than minus 1. So we have to see whether this system is causal or not. So चूँकि ये रैशनल ट्रांसफर फंक्शन है, हम चेक कर सकते हैं कि ये कॉजल है या नहीं है. आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में e of s आ रहा है. अगर हम e of s को टेलर सीरीज के थ्रू खोलें तो हम इसको 1 प्लस s प्लस s स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस s क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस s n बाई n फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमरेटर तो बहुत हाई ऑर्डर है और उसका ऑर्डर ग्रेटर देन दी ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर है. तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि आपका ऑर्डर ऑफ द न्यूमरेटर इज नॉट ग्रेटर देन द ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कुछ पोल्स n इज इक्वल टू इनफाइनाइट s इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर होंगे और आपका सिस्टम राइट साइडेड सिग्नल नहीं होगा. सो दिस सिग्नल और दिस सिस्टम इज नॉट अ कॉजल सिस्टम. इसको हम दूसरे मेथड से भी, कन्वेंशनल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं. और कैसे कि h of s को अगर आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके h of t निकालें तो आपको पता होगा या आपको याद है कि e raised to power minus t u of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 by s plus 1 होता है and real s is greater than minus 1.
but now this expression is being multiplied by a exponential, और ये एक्सपोनेंशियल जब भी आता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिले या एडवांस या टाइम शिफ्ट इज द बेटर टर्म. सो इस पॉजिटिव एस की वजह से हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव 1 का टाइम शिफ्ट है. तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट होके e टू पावर माइनस t प्लस 1 u ऑफ t प्लस 1 हो गया h ऑफ t. और ये सिग्नल भी आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ नॉट 0 फॉर t इज़ लेस देन 0, क्योंकि आप का जो सिग्नल है ये आउटपुट t इज इक्वल टू -1 से देना शुरू कर देता है. सो थ्रू बोथ वेज वी हैव प्रूवन दैट आवर सिस्टम इज़ नॉट कॉजल, बट जस्ट अगर हमें नज़र आ रहा हो जब भी कभी पॉजिटिव पावर वाला एक्सपोनेंशियल होगा तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम कॉजल नहीं है. The next property is stability of a system. We remember that to check the stability through the impulse response, हम कहते थे कि आपका सिस्टम जो है, the impulse response of the system should be absolutely integrable. यानी अगर आप उसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको कोई वैल्यू आपको मिलनी चाहिए या वैल्यू 0 अप्रोच करनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए. Now we remember that poles had to play a part in the stability, क्योंकि poles की situation में आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स इनफाइनाइट हो रहा है. Now the response due to any pole is of the form e raised to power at. आपके पास जब भी कोई पोल आता है से 1 by s plus p1 और इसका आप इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास e raised to power pt u of t आ रहा है if your system is causal. So every exponential contributes to a pole, or every pole in the s domain contributes to an exponential in the time domain. और अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होगा तो हमारे पास सिस्टम जो आपका है वो स्टेबल होगा, बिकॉज टाइम विल अप्रोच एज टाइम विल अप्रोच इन्फिनिटी, आपका मैग्नीट्यूड विल अप्रोच 0 और विल अप्रोच अ फाइनाइट वैल्यू. तो हम फॉर इंस्टेंस 2 पोल्स डिस्कस कर लेते हैं. हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम का पोल s इज इक्वल टू -2 पर है एंड इट्स अ कॉजल सिस्टम, यानी ROC इज ग्रेटर देन s इज इक्वल टू -2. टाइम डोमेन में आपके पास रिस्पॉन्स e टू पावर -2t u ऑफ t की फॉर्म में आ रहा है. तो हमें नज़र आ रहा है कि e टू पावर -2t एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है जिसका मैग्नीट्यूड 0 अप्रोच करता है टाइम t अप्रोचेस इन्फिनिटी. से फॉर इंस्टेंस हमारे पास पोल 2 s इज इक्वल टू 2 पर आ रहा था. नाउ आवर ROC इज s इज ग्रेटर देन 2 और आपके पास एक्सपोनेंशियल e टू पावर 2t u ऑफ t की फॉर्म में आ रहा है. बट दिस एक्सपोनेंशियल, an exponential such as e raised to power 2t u of t is something like this. It's a rising exponential. So as time t approaches infinity, its magnitude approaches infinity. और हमारे पास पोल जो था वो आ रहा था at s is equal to 2 और सिस्टम अनस्टेबल था. whereas for pole at s is equal to -2 आपका सिस्टम स्टेबल था. इसी सिचुएशन को अगर हम एंटी कॉजल सिस्टम्स के लिए एक्सटेंड करें तो हमें याद होगा कि हमारे पास इस किस्म का रिस्पॉन्स आता था जब आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर e टू पावर से bt जो है आपके पास b was greater than 0. So class, I took the liberty of pausing this video to make a clearer diagram. इस डायग्राम में आपको
आपके लेक्चर 19 और 20 के दो सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं. The first is a causal signal of the form e raised to power minus at u of t. आपने देखा था उस लेक्चर में कि जब a was greater than 0 तो आपका exponential decreasing था, and since it was a causal or a right hand side signal, so the ROC was outside the outermost pole, where the pole was at minus a. इस सिचुएशन में हमारा a लेस देन 0 भी हो सकता था. जब आपका a लेस देन 0 है उस सिचुएशन में आपका pole is at s is equal to a, and again since your ROC is outside the outermost pole, so the area shown shaded in green is your ROC. अगर हम कॉन्ट्रास्ट में हमारे एंटी कॉजल सिग्नल की बात करें तो हम एंटी कॉजल सिग्नल में देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में जब b ग्रेटर देन 0 है तो आपका पोल माइनस b पर है एंड द ROC इज इनसाइड द पोल. ये सिचुएशन आपके पास एक अनस्टेबल सिग्नल की है क्योंकि एज टाइम t अप्रोचेस minus infinity, the value of this function is equal to 0. Minus the value of this function is equal to infinity. So it's an unstable signal or unstable function. जब आपके पास b less than 0 है एंटी कॉजल के केस में तो आपके पास सिस्टम अगर h of t की बात हो रही है या सिग्नल की बात हो रही है तो f of t या x of t आपका as time t approaches minus infinity, its value is starts from 0. So ये एक स्टेबल सिस्टम है. अगर हम सिस्टम की बात करें और अगर एस डोमेन में हम इसका ट्रांसफर फंक्शन देख रहे हैं तो इसका पोल है s is equal to b पर एंड द ROC is inside the innermost pole. इन दोनों सिचुएशंस में ये सिचुएशन और ये सिचुएशन आपके स्टेबल सिस्टम्स को इंडिकेट कर रही है. और हम देख रहे हैं कि जब भी आपका सिस्टम स्टेबल है j omega axis is included in the ROC. So the condition for stability is an LTI system is stable if and only if the ROC of its system function includes the entire j omega axis, and on the j omega axis we remember that real part of s was equal to 0. So let's solve an example to determine the stability of a system. आपके पास एक LTI सिस्टम है जिसका आपने कॉजलिटी और स्टेबिलिटी डिटरमिन करनी है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, और h of s आपके पास गिवन है. h of s is equal to 3 by s plus 1 plus 2 by s minus 2. So let's write the transfer function. h of s is equal to 3 by, I don't know why is there so much lag in the camera, but let's try to solve this question. h of s is equal to 3 by s plus 1 plus 2 by s minus 2. Now since we are not given an ROC, so we can have three regions. Case 1 is when it's a left hand sided signal and real s is greater than the innermost pole. Now we can see that this signal has two poles. One pole, say S1 is at minus 1 and the second pole S2 is at 2. So which is the inner pole? The pole at S1 is equal to minus 1. So in case it's a left hand sided system or left hand sided signal, real s is less than minus 1. Now for this case, since it's a left hand sided signal, we automatically know that it's not causal. But what was the condition was causality? That it's a right sided plane. It's not a right sided plane, so it's not causal.
causal? No. And you can write the reason. What about stability? If the ROC is less than -1, does this include the G omega axis? No, it does not. So this is unstable. Now let's look at case 2. You can also prove this causality and instability through time domain functions, and this is what you will be doing as a question in your exercise problems, the problems which will be given with this lecture 23, that you will be determining the time domain expressions of these systems and proving why these are stable and unstable and causal and not causal by determining the h of t from this h of s. But I am just applying the property and taking the easier way. So case 2 is when it's a two-sided signal, and we say that -1 is the ROC is between -1 and 2. So if the ROC is between -1 and 2, it's a two-sided signal. Again, is it causal? No, it's not, because for a causal signal, your ROC is a right-sided plane. But here you are saying that your ROC is between these two poles. So is this system stable? Does it contain the G omega axis? Does the ROC contain the G omega axis? Yes, it does. So it's a stable system. Now case 3. When we say that it's a right-hand sided signal, and by right-hand sided signal we mean that the ROC is outside the outermost pole. And what is the outermost pole? The S is equal to the 2 pole. So now this is our ROC. This is equal to 2. Now is it causal? Yes, it is. Why? Because we said that it's a right-hand sided signal, so it is causal. Is it stable? Well, but does it contain the G omega axis? No, it does not. So that means it's unstable. So we saw for this system that we had 3 ROCs, and neither of these 3 ROCs we had was both stable and causal. We had 2 cases when our system one was unstable, and just 1 case where the system was stable, but in that case the system was non-causal. I am going to repeat again. I just told you that we have checked these properties by this system by applying properties, but you will be doing this by determining h of t in your exercise problems which I have given you. For the exams, it's your choice. Whatever method you want to use, you can use that method. So finally, we have a special case for when we have a stable and a causal system. So this is a special class of systems which we are most interested in, which is stable and causal systems. So a stable and a causal system is one whose poles lie in the left half of the S-plane. So an LTI system with rational transfer function is stable if and only if causal LTI system is stable if and only if all the poles of HFS lie in the left hand of the S-plane. That is, all poles have negative real parts. So let's check this by seeing a very simple system. We have a system which is HFS,
is 0.9402 pi square minus 0.0297, and we have to check whether the system is stable or not. So what do? We take the system, which is 0.9402 pi s square minus 0.0297. So how do we check whether the system is stable or not? Well, you have seen so many ways, but since we are dealing with the properties of h of s, we are going to solve it through using those properties, and we will just see whether the poles of the system, since it's mentioned that the system is causal, whether the poles of the system lie in the negative s plane or whether the real parts of the poles are negative or not. So we solve this equation, we rationalize it, and we get we have two poles. Now this pole is at minus 0.172 and this pole is at, let's say it V1, not S1, 0.172. Do both of these poles have a negative real part? No, this pole does not have a negative real part. This means this pole lies on the positive real S plane, which means that this pole will make the system unstable and our system is unstable. Finally, we are just going to do the definition of an inverse system. The inverse, we discussed that the inverse system was a system which, when convolved with the original system, gives you an impulse response. So in terms of transfer function, you can say that the inverse function has a transfer function such that when you cascade it with the original system, you get a 1. It's in the transform domain. So H inverse of S is 1 by H of S. I have told you that in your syllabus you don't have to design inverse systems. However, you might be asked to check whether this particular inverse belongs to the original system or not. So in that case, we just have to check whether Hi of S is equal to H of S or not. This concludes the characterization of LTI systems using Laplace transform properties. Next week, inshallah, we'll see how to solve linear constant coefficient differential equations using Laplace transform. So by the end of next week, we'll be completing our Laplace transform, and in Ramadan, we'll be starting Fourier series, inshallah. Wish you all the best. In case you have any questions, you can message me on WhatsApp, or you can paste it on under the videos. You can write your questions under the videos and I can answer it so everybody can get their matters resolved. Thank you. Allah Hafiz.